Now we human, along with living organism from a complex web to ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existing. आपका इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? डिफाइन द टर्म इकोलॉजिकल, इसको हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? इको सिस्टम। इको सिस्टम बताओ। The interrelation between the plant kingdom, animal kingdom, along with macro and microorganism. है ना? और आपका जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन कीजिए। फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो इंटर रिलेशन, इंटरेक्शन between physical environment and biological environment include land, soil, water, vegetation, plant and animal, human being or microorganism. Plant, animal and macroorganism create the quality of the air where we breathe. Water for drink, soil for growing crops. तो आपका बेसिक नीड्स क्या है? योर बेसिक नीड्स फूड है, यस या नो? कहते हैं कि without water, without air and without food we cannot survive. All the चाहे वो प्लांट, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग की बात करो या प्लांट की ही बात करो। अगर हम मान लो प्लांट में कंटिन्यूस 1 वीक हम उसमें वाटर नहीं डालते तो क्या प्लांट आपका क्या होगा? डेड कर जाएगा प्लांट। इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी पानी नहीं पिएगा तो वो भी डेड कर जाएगा। सो फॉरेस्ट प्ले a key role. Forests play a key role in the ecological system, as they are also the primary producers on which the living being. अब ये बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी वेरी सिंपल में बोलो, rich in the wildlife and cultivated species, diverse from and function with close integrated in the system through the multiple network of the interdependence. Multiple interdependence. So, importance of biodiversity. So, the total number of species of plant, animal,
and microorganisms living on the earth is known as the biodiversity. India is a vast country. India is a vast country and different the relief features. Different relief features. Himalaya region area, peninsular region area, plain region area, desert region area. So, nature of land and climatic condition. Nature of land and climatic conditions vary from place to place. तो वही करे कि the total number of the species of the plant, animal and the microorganism living on the earth is called the biodiversity. So what is the importance? कहता है कि biodiversity is important for the human, for ecological life support system. Ecological life support biodiversity. It means the combination, the familiars, the really plant kingdom and animal kingdom. Plant kingdom or animal kingdom. So biodiversity just gives the functioning the ecosystem that provide क्या प्लांट क्या आपको देता है फ्रेश एयर दे रहा है आपके सॉइल की फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है आपके टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है क्लियर एयर है वाटर है प्रोवाइड ऑक्सीजन प्लांट एंड वेस्ट वाटर कंट्रोल कर रहा है फ्लड कंट्रोल कर रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड लॉट्स ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज सो वी पीपुल that depend on the biodiversity for us existence. Biodiversity is the existence. Now, second, so we study about the flora and fauna. We study about the flora and fauna. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ते भी आए हैं कहते हैं कि प्लांट सम एनिमल एंड प्लांट विच आर द यूनिक इन आवर एरिया सम प्लांट चाहे वो यूकेलिप्टस हो चाहे वो इवोनी हो मोहगनी हो रोजवुड पाम हो या सम एनिमल्स that you know we study about the flora and fauna in the respects of our India. So India is one of the world's richest country in the term of its vast and the biological diversity. Vast biological diversity has nearly 8% of the total number of the species in the world. Total number 8%. क्यों vast diversity है? So due to the relief feature and climatic condition, due to relief features and climatic conditions,
This is possible twist or trace of the number yet to the discovered. You have the already studied the details of the extent and variety of the forest and wildlife resources in India. Variety of wildlife and forest. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for the granted. Flora and fauna. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for the granted, but lately they are under the great stress, mainly due to the intensity of our environment. So our environment day by day, disturbed due to the region. Some region. क्या है some region? बताइए. शिवम. Yes, sir. बताइए रीजन क्या है कि डे बाय डे आपका जो इन्वायरमेंट जो वो डाइवर्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, किस कारण से डिस्टर्ब हो रहा है? So because we human beings are cutting tree recklessly for Yes, industrialization, habitation, rapid cultivation, etc. yes, rapid increase of population, है ना? रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के कारण ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है. दूसरा क्या कारण है? आप देखते हो कि जैसे ही हम लोग कहते हैं कि some estimated suggested that at the last 10% of the India recorded wild flora and 20% the mammals are on the 30 list. Many of these would not be the category, the critical one, the work existing like the cheetah, pink, red duck है, black duck है, mountain quail है, forest. तो ये धीरे धीरे आपका खत्म होते जा रहा है. But the variety and the habitat, the thing. In fact, one can show how many species may have already been the lost. You know that among the large animals of India, it means the 79 species of mammal, 44 of the birds, and 15 and 3 are also lost. Second, one question, listen carefully. What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? What are the negative, page number 16 में देखोगे last frame कि what are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? Flora and fauna.
we have the transform the nature into a resource obtained directly or indirectly. Directly or indirectly from the forest and wildlife. जितने भी नेचुरल थिंग्स है, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ है, गिफ्टेड बाय द नेचर, तो उसको लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये मान लो सोर्स है। जैसे सपोज करो कि कोई भी एनिमल्स ले लो, सपोज करो कि कोई एनी एनिमल, चाहे वो वाइल्ड लाइफ एनिमल हो या डोमेस्टिक एनिमल, अब यूटिलाइजेशन इसका जब हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो हम लोग मिल्क पर्पज से यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के यूटिलाइज करते हैं ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं ना। यस सर। यस सर। अब देखो गाय, गौ से हम लोग मिल्क लेते हैं, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, या हॉर्स के फर को, उसको हम लोग कटिंग करके ब्लैंकेट तैयार करते हैं, ऊपर के स्किन को हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, नीचे के फेल्स को हम लोग मटन के रूप में यूज करते हैं, उसके और नीचे अंदर जाओ तो स्केलेटल्स है जो मैन्युफैक्चरर्स में काम, ये आपको फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, स्मेल्टिंग में इसका यूज करते हैं। तो ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द फॉर्म द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इट इज वी ours who have the deleted our forest and wildlife. Deflection. Who? So human being, man is the most important reason factors to destroy our natural environment for the some purpose की बात करती है। The major cause of depletion of the forest resources between the 1955, yes, to 1860, yes, 1985 to 1860. According to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometers of the forest area was covered into the agricultural land all over the world, India. So unstable part of the travel belt, especially the northeast India, northeastern and central India, have been the deforested or degraded, shifting cultivation. So define the term the shifting cultivation. Ansuman Vardhan. Shifting agriculture. Tell me. So continuous utilization of land with 3 and 4 years. जैसे ही हम लोग 3 and 4 years लगातार किसी लैंड का यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस में, तो लूज होता है आपके सॉइल की फर्टिलिटी लेस होता है, तब जाके ट्राइबल पीपल जो है वो दूसरी जगह जाके शिफ्ट द न्यू प्लेस पे जाके एग्रीकल्चर है। एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ द स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है।
ह्यूमिंग फार्मिंग है, ह्यूमिंग फार्मिंग है। नाउ how the human activity affected the depletion of the flora and fauna. One question, I said. Human activity कैसे अफेक्ट करता है आपके डिप्लेक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना? Man is the most important components of environment. ये रिसोर्सर भी है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉय भी करता है। तो द फ्लोरा एंड फौना, so first of all the forest is the home of the wildlife animal. Forest provide us with food. Forest provide us with food. जैसे अभी आप देखो मैंगो की, काफी आप लोग मैंगो यूज खा रहे हो। Wood, bricks, lead, rubber, medicine, dye, food, fuel, and years. फॉरेस्ट, अब इसका जैसे ही हम फॉरेस्ट ग्रुप में, चाहे वो पत्ते हो, टहनियां हो, वृक्ष, लकड़ियां हो, फल हो, ग्रासेज हो, इन सभी चीज का हम लोग यूज, आप देखोगे ट्रैवल पीपुल जंगल में जो घूम घूम के लकड़ियां चुनती है, पर्पस क्या है? टहनियां तोड़ती है, सूखी हुई लकड़ियों को चुनती है वो लोग, पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है वुड फ्यूल का। इन द एंशियंट टाइम की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग करता है कि 80% द पीपुल आर द यूज द वुडन फ्यूल का। इन द रूरल एरिया की बात करते हैं, ट्राइबल पीपल जितने भी तो जनजाति, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल की बात करते हैं, बकरी वाला है, गुज्जर वाला है, संथाल से उड़ाव है, उधर गारो खासी डिवीजन एरिया की बात करते हैं, जितने भी ट्राइबल पीपल है उन लोग का जो मेन एरिया था वो आपका फॉरेस्ट था। ये मेन ऑक्यूपेशन उन लोग का फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट गुड्स एंड एनिमल का वो लोग यूटिलाइज करते थे और उसी से अपने आप को वो सरवाइव करते थे। फिर कॉलोनियल पावर आने के बाद जो है फॉरेस्ट को जो है बैन लगा दिया, वहां से जो ट्राइबल पीपल जो थे उनको हटा दिया गया और तब उस फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्पस में यूज किया, उसके स्लीपर तैयार होते थे। तो फॉरेस्ट गिव्स प्रोवाइड करता है वुडन इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, हर्बल इंडस्ट्री, ये सारे। बट ड्यू टू द मॉडर्न एरा and rapid increase of population, अचानक जैसे पॉपुलेशन का बढ़ते गया तो सबसे पहले उसके पास सेटलमेंट और फूड की प्रॉब्लम आ गई। तो क्या क्या वो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द, क्या किया, द क्लियरिंग, द कटिंग ऑफ द लार्ज स्केल्स में, वो कटिंग ऑफ ट्री। जैसे ही वो लार्ज स्केल में कटिंग ऑफ ट्री किया तो किस लिए पर्पस था उनका कि या तो सेटलमेंट हो या
for the sake of agriculture, urbanization या industrialization. But उसका negative aspects क्या है कि जो एक फॉरेस्ट जो था वो लोकल ट्रैवल पीपुल्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम का जरिया था। दूसरा, उस फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स जो थे उनका वो परमानेंट सेटलमेंट था। अब ट्रैवल पीपुल एंड एनिमल बोथ आर क्या हुआ, डिप्लेक्शन हो गया, माइग्रेट कर गए। नेचुरली है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द मोर फूड प्रोडक्शन, forest have to be cut the make with the agriculture के लिए। नेचुरली है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नेचुरली है कि स्कार्सिटी इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ गया, रिक्वायरमेंट बढ़ गया। रिक्वायरमेंट नॉट ओनली द सेटलमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फूड की भी रिक्वायरमेंट। तीसरा, ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड क्या, डिप्लेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, चाहे वो नर्मदा हो मध्य प्रदेश या सतलज हो, इंडस हो या महानदी हो। जैसे ही आप कोई डैम का कंस्ट्रक्ट करते हो तो एक्वेटिक लाइफ और आसपास के जो कम्युनिटीज हैं, कल डिस्कस करेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पर, कल करते हैं, पहले आज बताते हैं कि आसपास के जो कम्युनिटीज थे उनकी लैंड चली जाती है। और लार्ज डैम हैव कॉज्ड द सबमर्ज ऑफ द ट्री एंड फॉरेस्ट। The next activities also affected the flora and fauna, इसके द्वारा, the human के द्वारा। Mining activity, so mining activity is the another reason for the depletion of flora and fauna. Another reason, flora and fauna. Now, conservation of forest and wildlife. Conservation of forest and wildlife. क्या conservation? To conserve, to save our natural things, चाहे वो प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम, फ्लोरा हो या फौना, उसको हमको आज के परिस्थिति में करना है। Why do we need to conserve? Why we need to conserve? We need to conserve है ना, we need to conserve because the conservation, the process of the ecological balance, ecological diversity and our life support system
चाहे वो वाटर हो, एयर हो, लैंड. It is also the preserve that the genetic diversity of the part of plant and animal. So conservation है ना. So conservation in the backbone of background of rapid decline the wildlife population and forest have become the essential. तो अचानक लगातार आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट एंड एनिमल रैपिडली करता है. सो इट इज सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट. अगर इस तरह से लगातार आप पेड़ को काटते जाओगे और एनिमल जस्ट तो ड्यू टू द नो इंटर रिलेशन बिटवीन द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम व्हाट हैपेंड. सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा. सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन तो टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस तो आपको एफॉरेस्टेशन और सेव द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाना है. उसकी कुछ उपाय तो करनी होगी ना. इन द 1960 and 1970 60 and 70 जो कंजर्वेटिव उनका डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? इन 1972. Very good. Yes, the Wildlife Protection Act 19 implemented in the 1972. Purpose क्या था? Purpose तो provision to protect the valuable species. ठीक है. तो वेलेबल आपका जो वेल्युएबल स्पेसीज था उसको वो प्रोटेक्ट किया गया. वाइल्ड लाइफ को सेव किया गया. वाइल्ड लाइफ को सेव किया गया और क्या किया आपका इन 1970. सो बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत सारे लॉ थे. तो क्या है? स्टॉप द सेंट्रल गवर्नमेंट also announced the several projects for the protecting a species animal which were heavily treated, including the वो project टाइगर्स की बात कर रहे हैं. This type and distribution of forest and wildlife resources, even we want to conserve the forest and wildlife resources. It is rather difficult to manage, to control rather than. So tomorrow just discuss details the community and conservation of the wildlife and wildlife flora and fauna conservation. Okay, Shivam. Okay, sir. Write down the Yes, short sir. note. And Suman,
you also just the diversity के बारे में लिखेंगे, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, और क्यों आपका ये डाइवर्सिटी हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक से है, ये आपको वही बताए थे कि द एरिया कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी द बैंडेड, सब वही बैंड किया गया था। द इनरिचमेंट द प्लांटेशन सिंगल commercially value species, extensive planted and the other species the imitate area. The large scale development projects have also the contribute the significantly to loss of the forest. In the 1950